number one on television, now soon on digital this July. For 6 years, you've trusted Republic TV. अच्छा मैम, पैरालंपिक्स के बारे में बताइए आप। पैरालंपिक्स की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई 2010 में जब मैं कॉमनवेल्थ खेली तो मुझे पता लगा कि मेरी तो वर्ल्ड रैंकिंग है, मैं तो बहुत अच्छा खेलती हूँ। एंड 2010 आई वाज आल्सो जॉइन्ड बाय माय डॉटर एज माय अटेंडेंट। शी आल्सो गॉट इंस्पायर्ड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। आज हम मदर डॉटर एक ही जोड़ी हैं पूरे वर्ल्ड में जो इकट्ठे डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में खेलती हैं और खेली हैं और देश के लिए मेडल भी लाई। Ever since we launched in 2017, we've been India's #1 news channel, and then we became India's #1 news network. Today we operate the #1 channels in English, in Hindi and in Bangla, and we're going to expand across India and hopefully very soon to the entire world. Now this journey cannot be complete without us entering the digital news medium in a stronger, effective and well-planned way. And I'm delighted to share with you, with all of you, our support base, our viewers, our followers, and people who are really part of Republic, that yes, Republic, India's #1 on television, is now coming on digital. This July, Republic will be on digital. मुझे कोई इन अलायंसों के से नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा या जम्मू कश्मीर को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। Days ahead of the opposition unity meeting, Omar Abdullah says nothing for Jammu and Kashmir in this grand alliance. एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते हो। Condition after condition, wrestlers now saying will participate in the Asian Games only after all issues are resolved. Bharat Congress batting for the Tukde lobby questions judiciary over Umar Khalid. दूसरी जिम्मेदारी सूफिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं। Sharad Pawar announces Supriya Sule and Praful Patel as the new NCP working presidents. No party role for Ajit Pawar. Here in Karnataka, the Congress is trying to remove a chapter from the history textbooks on the founder of RSS, Hedgewar, and the activities of the organization. BJP accusing Congress of targeting RSS-linked organizations in Karnataka launches a legal helpline. गुजरात पुलिस द्वारा ISKP से जुड़े हुए 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक सूरत में से भी गिरफ्तारी की गई है और 3 लोगों की पोरबंदर से गिरफ्तारी की गई। ISIS module busted in Gujarat, 5 arrested by the ATS with weapons. Another 18-hour raid. ED gathers evidence in the Kerala bank scam in which a top Congress leader is the key accused.
And on top of this is exclusive at 6 p.m. even as the wrestlers' protest continues. A fresh condition set by the Olympic medalist Sakshi Malik. She has said to Republic that the grapplers will not participate in the Asian Games unless issues relating to the protest are resolved first. Sakshi's comments coming at a time when trials for the Games are scheduled to take place this month. Listen in. एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते हो। देखो पहले अब हम एक बार पूरा फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि क्या करना है। बाकी 15 तक हम वेट कर रहे हैं। जब तक भी उचित कार्रवाई नहीं होती तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कल बहुत सवाल उठे हैं विनेश जी की प्रेजेंस को लेके, इधर भी नहीं आई हैं वो, तो उस बारे में आपका जो इन सवाल उठ रहे हैं इन पे आपका क्या कहना है? मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं विनेश बजरंग हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे जब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं हो जाता। बाद में जाने, लेकिन हम फिलहाल एक हैं। नहीं आने का रीज़न है 100 लीगल काम होते हैं, 100 पुलिस जांच होती है, वो वहाँ अपना योगदान दे रही है, हम योगदान अपना यहाँ दे रहे हैं, पर हम एक है। पिछली बार ये न्यूज़ चला रखी थी साक्षी ने प्रोटेस्ट से नाम वापस लिया, करी नौकरी ज्वाइन, तो ऐसी फेक न्यूज़ ना चलाओ। जो हमारे समर्थक हैं वो टूट रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो गलत न्यूज़ चला के गलत अफवाहें ना उड़ाइए। क्या हम जंतर मंतर पे आपको दोबारा 15 के बाद अगर गिरफ्त नहीं होती, 15 तक अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो 15 को शाम तक ही आपको बता दिया जाएगा कि कल से हम क्या कर रहे हैं। जो चीज़ें हमारी सरकार के साथ बातचीत हुई थी वो हमने अपने जो समर्थन में थे, जितने भी संगठन थे, चाहे किसान संगठन है, चाहे महिला संगठन है, मजदूर संगठन है, जितने भी संगठन है, या हमारे खाप चौधरी हैं, जितने भी लोग हमारे से जुड़े हैं, उन सबको हमने यही बोला था कि भाई हम बात करके गवर्नमेंट के साथ उनके सामने ले जाके रखेंगे। तो हमने उनके साथ बातचीत करी है, उनके सामने ये चीज़ें रखी हैं कि भाई सरकार पे इन बिंदुओं पे हमारी बात हुई है, वो हमने उन लोगों को बता दी है। उन्होंने बोला कि भाई 15 तारीख तक हम आप लोग जो समय दे के आए हैं हम आप लोगों के इसका समर्थन करते हैं, और 15 के बाद अगर कोई फैसला नहीं आ पाता तो हम जो कॉल आप लोग देंगे, क्योंकि मैं पीछे जो पंचायत थी मुडलाना में वहाँ पे बोल के आया था कि एक कॉल खिलाड़ी देंगे, तो वो कॉल हम देंगे 16 या 17 को, उसमें फिर हम बड़ा फैसला लेंगे। आज यहाँ पे साक्षी मलिक जी हैं, आप हैं, पर एक सवाल उठ रहा है कि हम विनेश जी को नहीं देख पा रहे, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए विनेश की थोड़ी तबीयत डाउन है और वो लीगल टीम के साथ लगातार टच में है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे पहले भी मैंने बताया था। उस दिन हम खेल मंत्री से मुलाकात करने गए थे, उस दिन भी बोले कि भाई विनेश क्यों नहीं आई। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई उनके आपस में खिलाड़ियों में दरार है। अगर दरार होती तो हम यहाँ क्यों पंचायत करते घूमते। हम सभी साथ हैं और खिलाड़ी इसमें और जुड़ रहे हैं, ये नहीं कि कम हो रहे हैं, खिलाड़ी इसमें और जुड़ रहे हैं। पूरा देश तो हमारे साथ खड़ा ही है, पर खिलाड़ी भी जुड़ रहे हैं। जैसे अभी गवाह आगे 2 मीडिया के सामने आगे, जब ब्रजभूषण बोला था ना कि पहले कोई लड़की एक भी आ जाएगी तो मैं फांसी लगा लूँगा, फिर बोला मेरे पे आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो मैं फांसी लगा लूँगा। अब तो सिद्ध करने वाले भी आगे, गवाह भी आगे, जो मीडिया के सामने बोले, टीवी के सामने बोल रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हमने देखी हैं। तो अब कहाँ गया उनका वो जो रस्सा टांग रहे थे, वो फांसी पर लटक रहे थे, तो अब कहाँ चला गया वो रस्सा? आपने गवाहों की बात की, कल ही हमने इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह जी से बात करी और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि मैं खुद एक विटनेस रहा हूँ, पर बहुत सवाल ये उठते हैं कि इतने समय तक ये स्टेटमेंट उन्होंने पहले क्यों नहीं दी। कल भी यही सवाल एक सब उठ के सामने आया। आप ये बताइए, जब इतने खिलाड़ी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, पद्मश्री हैं, खेल रत्न हैं, जब उनके बोलने से इस देश में न्याय नहीं मिल रहा, 5 महीने हो गए, एक आदमी बोलता तो उसका क्या असर होता। जो नाबालिग का जो पिता है जो लड़की के, वो बोल रहा है कि मेरा पूरी फैमिली डिप्रेशन में है, मेरे ऊपर कितना प्रेशर दिया जा रहा है। तो एक आदमी 2012 में भी आवाज़ उठाई थी, 2014 में भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन दबा दिया गया। एक आदमी कोई भी आवाज़ उठाता तो वो इतना ताकतवर, इतना बाहुबली इंसान है जो किसी को भी मरवा सकता है। 3 दिन बाद अनुराग ठाकुर से मीट के 3 दिन बाद आज आपके ये एक खाप पंचायत की कॉल हुई है, तो क्या बातचीत उस मुद्दे पे रही, या किस तरीके से उन्होंने सरकार से आपकी बातचीत हुई है, जिसके बाद हम इस प्रोटेस्ट का एक अलग साइड देखने वाले हैं? क्या बिल्कुल, उन्होंने बोला कि 15 तारीख तक जो आप बात करके आए हैं, 15 तारीख तक हम उसका सपोर्ट करते हैं।
अगर 15 तारीख तक कोई कदम नहीं उठाया जाता, स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाया जाता सरकार की तरफ से, तो फिर हम 16 या 17 को हम बड़ी कॉल लेंगे और उसमें कोई बड़ा फैसला लेंगे. Moving on to some news from Kerala now, and what's being seen as a potential scam with a big Congress link in Kerala. The Enforcement Directorate has raided the Pulpalli Cooperative Bank after a loan fraud case came to light. The raids ended after 18 hours in which Congress leader KK Abraham is believed to be number one accused in the case. Republic spoke to the president of the Pulpalli Bank. Listen in. എത്ര ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്തത്? അവർ വിജിലൻസ് നേരത്തെ പിന്നെ ഇവിടെ ഫയൽ ഇവിടെ പിന്നെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഫയലുകളാണ് അവർ പരിശോധിച്ചത്. ഈ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാമാണ് പിന്നെ അതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിജിലൻസ് എടുത്ത ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് സെർച്ച് ചെയ്തത്. അത് അതിനെല്ലാത്തിനും കോപ്പീസ് അവരെടുത്തു? കോപ്പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിജിലൻസ് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഫയലുകളുടെ എല്ലാം കോപ്പി എടുത്തിട്ടാണ് അവർ പോയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ സഹകരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നത് ഇവിടെ? ഞങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും, അവരാവശ്യപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഒന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുക, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എത്ര നേരം ഈ റെയ്ഡ് കണ്ടിന്യൂ ഉണ്ട്? രാവിലെ എപ്പോൾ തുടങ്ങി? രാവിലെ ഏതാണ്ട് 11:30 തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പം സമയം 1:45 1:40 ഈ സമയം വരെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും, ഞങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ ആയ എൽദോസും മാത്യുവും പിന്നെ ടോമിയും ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനൊന്നുമല്ല, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പോകുക, അവരുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പഴയ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് പോകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിന് ഞങ്ങളോട് അവർ സഹകരിച്ചു, ഞങ്ങൾ അവരോടും സഹകരിച്ചു. നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ച് അവർ ഞങ്ങളോട് നന്ദിയും പറഞ്ഞ് പിരിയുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ സമയമായപ്പോൾ. Republic TV is on the ground investigating the story. Then we came to know that the loan fraud done by the bank, which is held by the Congress party, has many victims. And I am at the home of one of the victims, and let's hear from him what he has to say. So, നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്ത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ലോൺ എടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എൻ്റെയും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ 62 സെൻറ്റ് സ്ഥലം വെച്ച് 2 ലക്ഷം രൂപ അവർ പാസ്സാക്കുന്ന എല്ലാ. ഏത് വർഷം? 2018. കാശ് കിട്ടിയോ? 1 രൂപ പോലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ല. ലാസ്റ്റ് ഈ സുപ്രഭാത് ഇവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പെരമണി കോൺട്രാക്ട് പണി എടുക്കണ വല്ലപ്പള്ളി സജീവനായിരുന്നു. അവൻ കോൺട്രാക്ട് പണി എടുത്തു തരാൻ പെര ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് വന്നപ്പോഴാണ് 36 ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ ബാങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോട്ടീസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു പൈസ പോലും എടുത്തിട്ടില്ല. എത്ര അടയ്ക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പോൾ 60 ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ബാങ്കിൻ്റെ മുന്നിൽ 7 മാസം 2 ദിവസവും സമരമായിട്ടിരുന്ന ഞാൻ വ്യക്തിയാണ്. എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രാജരെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ലോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ 70,000 രൂപയുണ്ട്. ബാങ്ക് എത്ര അടയ്ക്കണം എന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പോൾ പലിശ എല്ലാം കൂടി 40 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ അടയ്ക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നോട്ടീസ് കണ്ടപ്പോൾ. ഈ മരിപ്പിൻ്റെ കുറിപ്പിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കിട്ടിയല്ലോ, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാജേന്ദ്രൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ബാങ്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും പറയുമ്പോൾ അടയ്ക്കാനൊക്കെ അവർ പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷനും ഭയങ്കര വിഷമത്തിലുമായിരുന്നു. They were approached to this KK Abraham and Sajeevan Kollapalli, then these bank authorities. Initially, they told that they will clear your dues and everything, and we will give back the papers. But later, they were never paid this amount, and it is extended for so many years. Is it true that there was a collective, some 36 people also was facing similar problems from this particular bank? Yes, actually, the nearby peoples, around 38 peoples, taken this loan. They were cheated. 38 peoples were cheated by the bank, Pulpalli Service Cooperative Bank, and almost 8 crore rupees was borrowed from the bank without proper documents. Ashwin, what is the scam all about, and what is the Congress link to it? How many people have been duped?
Niranjan, this is a huge scam and it is estimated to be around 30 crore rupees. Now, what is the Congress connection? Well, the General Secretary of the Congress Party, KK Abraham, was the president of this bank until a few weeks ago before he was arrested by the vigilance. Now he is in jail. He's in remand along with the former president of the bank as well. There are 10 people who have been charge sheeted now. This is a bank which has been traditionally been run by the Congress Party itself. They say, they well claim that for 100 years they have been running it. No other party has, worked in this manner. So what we see over here, there is this KK Abraham and alleged Binami office and money. For instance, a farmer wants a loan of 2 lakh rupees. They pledge their land for 60-70% of land, and instead of 2 lakhs, they take 36-40 lakhs, and this money is transferred to the Binami of the congressman. And the farmer, on the other hand, does not even know this money has been transferred. So similarly, there has been several such cases that has come forward. For many years, there has been a protest that has been taken out by these victims. It fell on deaf ears. We have confronted with the Congress MLA of the land also. He also was, ducking the questions that we put forward. There is certainly a very deep nexus of the Congress Party and its tentacles in this entire mismanagement and fraud and in the way this entire bank has been functioning. For instance, all the directors of the bank are all connected to the Congress Party, and not only that, Niranjan, the tune of the manner in which the entire bank has been functioning, we have to see that these binamis and these middlemen have made palatial homes over here. And farmers over here, they take a loan of 2 lakhs, they take a loan of 1 lakh, they get a challan for they get a recovery of 50 lakhs, 60 lakhs. So around 30 people are already there, and there is a lot of confusion and a lot of pain and agony among the poor people who has put money, who has taken loan from these banks. So certainly, KK Abraham is not the only person. In fact, I did confront the IC Balakrishnan, who is the MLA from Sultan Batteri, for he is from this very constituency. In fact, there was an internal probe made by the Congress Party held by former MLA VT Balram, a young Turk of the Congress Party. Now, that the entire internal probe, it has not been made public. That is how embarrassing the situation is. Congress has deep nexus in this entire scam. It is yet to come out, at least in the last audit that was conducted by the registration department of registration of society. They've estimated around 22 crore loss for the bank. So this is the situation on the ground. There are a lot of farmers who are agitating. Many of them are very, very perplexed. We have met many of them. Many of them are poor people. There are land which has been, their properties are pledged in the bank and they have not been returned. And there has been a complete loose way in which this entire situation has been handled. Now, remember, this is the same Congress Party which is against the center trying to streamline all the cooperative societies. And what we see here is an absolute mismanagement, fraud, forgery. We have got instances where the signatories, the signatures of directors of the bank has been forged by these people, all connected to the Congress Party. That is how serious this entire scam is. But Congress is ducking the question. They are saying the internal probe was done. They have given the details to the higher authorities in the KPCC, and it is up to them to take an action. In fact, despite all this corruption that has come forward, it took KK Abraham only resigned very recently. The party did not even have the spine to ensure that this man has been thrown out of the party. He in fact resigned voluntarily. That's how easily Congress has taken this entire scam when their hands are completely dirty. A lot of poor people are in a bind because of this mismanagement by the Congress Party, because they have been traditionally running this cooperative society. Thank you for that. Thank you for giving us those details, tracking the story very closely from Kerala here on Republic TV. Exclusive report being filed by Republic's Ashwin Nandkumar. In fact, no other channel is even reporting on the story. Very, very strange. Republic on top of it. Taking a short break now. On the show, we'll take a break and we'll come back with the other top stories we're tracking, including the story from Gujarat, where an ISIS module has been busted. Stay tuned. I was
delighted to learn that Republic TV is going digital this July. They have made nationalism and patriotism so very popular with the people of India. But I'm sure in the times to come, they will also transform the narrative at the regional and the global level. I wish Republic TV all the very best. Jai Hind! Republic has been number one on TV for the last 6 years. In these 6 years, you've given us all your love that has only propelled us to grow more. We've reported in the most challenging circumstances from the most remote locations. And now it's time for digital. Republic on digital this July. Number one on TV, now soon on digital. Republic on digital this July. Ever since we launched in 2017, we've been India's number one news channel, and then we became India's number one news network. Today we operate the number one channels in English, in Hindi and in Bangla, and we're going to expand across India and hopefully very soon to the entire world. Now this journey cannot be complete without us entering the digital news medium in a stronger, effective and well-planned way. And I'm delighted to share with you, with all of you, our support base, our viewers, our followers and people who are really part of Republic, that yes, Republic, India's number one on television, is now coming on digital. This July, Republic will be on digital. Republic TV has been number one for the last 6 years. We've reported some of the biggest stories that matter. We have changed the face of Indian television journalism, and now we are about to do the same on digital. Republic on digital this July. Republic number one on television, now soon on digital this July. For 6 years, you've trusted Republic TV with breaking news, views and debates. For the very first time, we're bringing number one news brand on digital. Stay tuned for Republic Digital this July. Republic TV, number one on television, soon on digital this July. Republic TV, number one on television, now soon on digital this July. Republic has been number one on television for the past 6 years. We have broken the biggest stories and reported from where it mattered. Republic has disrupted the broadcast news industry, and now Republic comes on digital. Republic on digital this July. Republic number one on TV, now soon on digital this July. Republic has been number one for the past 6 years. We've broken the biggest stories and reported from where it mattered most. We've disrupted the broadcast news media from India, and now we are coming to digital. Republic on digital this July. Republic number one on TV, now coming to digital. Republic on digital this July. A long-term investigation that is being carried out by the Gujarat ATS, a long-term crackdown of sorts that is being carried out by the Gujarat ATS as well to uncover the entire ISIS network
that has been operating in the state and has been carrying out anti-India activities as well. Now, speaking specifically about these 4 people, because as of now, the officers have taken them into custody and they will be bringing them back to Gandhinagar, where they will be officially, of course, producing them for the remand as well. So all of those procedures will be done, but what is essentially these 4 people had also been doing was running a radicalization outfit and radicalization ring, where all the youngsters of the youngsters of the state of Gujarat as well had been radicalized. They had been sought after. They were college-going students as well. So there was a years-long nexus that was being run in the state of Gujarat, and not just Gujarat but other states as well. Of course, not too much information is being divulged as of now by the Gujarat ATS, since they are saying that there might be some more suspects that they will be arresting and taking into custody so that they can be interrogated further. अच्छा मैम, पैरालंपिक्स के बारे में बताइए आप। पैरालंपिक्स की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई 2010 में जब मैं कॉमनवेल्थ खेली तो मुझे पता लगा कि मेरी तो वर्ल्ड रैंकिंग है, मैं तो बहुत अच्छा खेलती हूँ। एंड 2010 आई वाज आल्सो जॉइन्ड बाय माय डॉटर एज माय अटेंडेंट। शी आल्सो गॉट इंस्पायर्ड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। आज हम मदर डॉटर एक ही जोड़ी हैं पूरे वर्ल्ड में जो इकट्ठे डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में खेलती हैं और खेली हैं और देश के लिए मेडल भी लाई। Amity School of Communication has been ranked among India's top 5 mass comm institutes for the last 3 years by India Today, a testimony to its most high-tech studios, senior professionals as faculty and placements in leading media organizations. To apply, visit amity.edu. Republic TV has been #1 for the last 6 years. We've reported some of the biggest stories that matter. We have changed the face of Indian television journalism, and now we are about to do the same on digital. Republic on digital this July. Republic #1 on television, now soon on digital this July. For 6 years, you've trusted Republic TV with breaking news, views and debates. For the very first time, we're bringing #1 news brand on digital. Stay tuned for Republic Digital this July. Republic TV, #1 on television, soon on digital this July. Republic TV, #1 on television, now soon on digital this July. Republic has been #1 on television for the past 6 years. We have broken the biggest stories and reported from where it mattered. Republic has disrupted the broadcast news industry, and now Republic comes on digital. Republic on digital this July. Republic #1 on TV, now soon on digital this July. Republic has been #1 for the past 6 years. We've broken the biggest stories and reported from where it mattered most. We've disrupted the broadcast news media from India, and now we are coming to digital. Republic on digital this July. Republic #1 on TV, now coming to digital. Republic on digital this July. Republic TV #1 on television, now soon on digital this July. Republic #1 on TV, now soon on digital this July. Republic has been #1 for the last 6 years, and in these 6 years you've loved us, you've supported us, you've stood by us, and we at Republic have broken the biggest news stories. We've set the nation's news agenda, and now we are ready for the big disruption on digital. Yes, so that you don't miss a moment of what's going on.
We are live and breaking this Saturday evening. I'm Shivangi Shukla and we're getting many details coming in right now. Multiple updates coming in. Number one, remember just a few days are left for that very important opposition meet in Patna. Number two, the wrestlers are not stopping. They want their demands to be met. We'll get to you all the details of these stories, but first the headlines we're tracking at this moment. मुझे कोई इन अलायंसों के से नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा या जम्मू कश्मीर को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया।